राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड आणि राज्यसभा खासदार जया बच्चन यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली। जया बच्चन यांच्या नावाच्या उल्लेखावरून दुसऱ्यांदा हा वाद रंगला। त्यामुळे राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला, तर विरोधकांनी याच मुद्द्यावरून सभात्याग केला। पाहूयात। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Only you build reputations. We come here and build reputations. शुक्रवारचा दिवस राज्यसभेत वादळी ठरला। राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली। त्याला कारणीभूत ठरलं धनखड यांनी जया बच्चन यांचा केलेला नामोल्लेख। धनखड यांनी जया बच्चन यांच्या संपूर्ण नावाचा उल्लेख केला। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। धनखड यांनी नाव पुकारल्यानंतर जया बच्चन यांनी त्यावर आक्षेप घेतला। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. जया बच्चन यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर वाद वाढत गेला। सभापती धनखड यांनी जया बच्चन यांनाही खडे बोल सुनावले। You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no. सभापतींचा आक्रमक पवित्रा पाहून विरोधकांनी एकच गदारोळ केला। No seat given to you. No. You don't have floor now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. Nothing doing. Nothing. No. No. Not at all. I will not bear it. You विरोधकांनी सभापती धनखड यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली, तसंच सभात्यागही केला। नहीं, जया बच्चन इसीलिए तो खड़े हुई थी। जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़े हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। सभापती धनखड आणि जया बच्चन यांच्यात शाब्दिक युद्धाची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये। गेल्याच आठवड्यात याच मुद्द्यावरून त्यांच्यात वाद रंगला होता। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला। तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट में बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। त्यावेळी हे प्रकरण फार ताणलं गेलं नव्हतं। मात्र यावेळी जया बच्चन यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे वादाची ठिणगी पडली। एकीकडे सभापती धनखड आपल्या मुद्द्यावर ठाम होते, तर दुसरीकडे जया बच्चन यांनी हे प्रकरण लावून धरलं। त्यामुळे राज्यसभेत राजकीय गदारोळ पाहायला मिळाला। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।